Assalamu alaikum everyone, welcome to Quantum Mechanics 1, and today we are starting our next chapter number 5 according to this Teach Yourself Quantum Mechanics 1 book, and the chapter name is Angular Momentum. Angular Momentum we're going to discuss. Angular Momentum बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, जैसा कि हमने अपनी सिंपल बेसिक लेवल पे पढ़ा हुआ है, that is the linear momentum which is equal to P is equal to mv, and angular momentum which is due to the motion, the circular motion, orbital motion. So we describe this momentum as L is equal to R cross P, where P is the linear momentum again. So we get the cross product will be equal to Rp sine theta, and for maximum value of sine theta means which is equal to theta is equal to 90 degree, which shows that the angle between this V value and the R value should be 90. So at that value, this becomes equal to Rp because sine 90 becomes equal to 1. So we will get P is equal to mv. So we get mvr. So the angular momentum L is equal to mvr. So these were just a few previous concepts. So now we're going to study the orbital angular momentum in Cartesian coordinate system. As we know that angular momentum is a concept in 3 dimensions, so we have to use the Cartesian coordinate in defining and its motion. So as electron revolves around the nucleus in circular orbit, so we have to develop the operator for calculating the orbital angular momentum. So in terms of operator, we say that L is equal to R cross P, where R cross P is the linear momentum, and in quantum mechanics its operator is basically equal to minus iota h का del. ये चैप्टर नंबर 2 में हमने इसको डिस्क्राइब किया हुआ है. So we put the value of P here, and then this minus iota h cut will be taken as outside, and we will take the cross product of R cross del, where R is equal to this and P is equal to this. We know that in Cartesian coordinates in terms of I, J, K. तो हम इनके क्रॉस प्रोडक्ट अगर डायरेक्टली कैलकुलेट करें तो हमारे पास R और P की वैल्यू होगी, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे और वहां से उसको मैट्रिसेस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली हम इसको इस शक्ल में. इट्स I, J, K, X, Y, Z एंड P, X, P, Y, P, Z. तो अब हम उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली. So from that determinant, as you can see here, when we solve it for I and then we solve it for J and then we solve it for K, we will get these value that Lx is equal to ypz minus zpy, Ly is equal to zpx minus xpz, and Lz is equal to xpy minus ypx. अब इसमें आप देख सकते हैं कि अगर आप x कंपोनेंट को कैलकुलेट कर रहे हैं तो y और z कंपोनेंट, y component of position and z component of momentum वो इंटरचेंज हो रहे हैं एक दूसरे से, और आप यहाँ से p z की वैल्यू को भी अगर आप पुट करें तो आपके पास x कंपोनेंट इसके इक्वल आएगा, जैसे कि मैंने अभी देखा था इन प्रीवियस स्लाइड दैट P is equal to minus iota h cut del. So del is basically partial x plus partial y plus partial z. So for pz this will be equal to minus iota h cut partial z. So उसकी वैल्यू को यहाँ जब पुट करेंगे तो ये माइनस आयोटा h कट ये pz की वैल्यू आएगा और py के साथ भी आएगा, तो ये कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y partial z माइनस z partial y. ये partial y पी वाई की वैल्यू से आएगा, राइट. सो इस तरह से हम जो y कंपोनेंट है उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटरमिनेंट सॉल्व करके वहां से एल वाई की वैल्यू आ जाएगी और उसमें से जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड. अगेन अगर y कंपोनेंट है तो z पोजीशन का और x मोमेंटम का माइनस x पोजीशन तो z मोमेंटम का. तो इस तरह से आप यहाँ से उसका इन पार्शियल डेरिवेटिव भी आप उसके कंपोनेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं. These both equations can be used in various places. So next is the orbital angular momentum in spherical coordinate system. हम इनको spherical coordinates में भी स्टडी कर सकते हैं. Just like x, y, z in spherical coordinates we have r, theta and phi.
तो r theta और phi क्या है, ये आपने MMP में पढ़ा होगा. This is, consider this is the nucleus, this is the electron which is revolving around the nucleus. This is the z-axis, this is y, this is x. So this is the angle between the, you can say that the position vector r and the z-axis. Phi is the angle between x and the position with respect to x and y. This is the projection. You can say that this point, this specific point, this defines the r sine theta. This component is the r sine theta cos theta and r sine theta phi theta for y-axis. So for spherical coordinate system, del की वैल्यू हमने पढ़ी हुई है, वो इसके इक्वल होती है. This one, this one, the value of del. यहाँ पे हमारे पास L is equal to r क्रॉस p है. अगेन r क्रॉस p की वैल्यू हमने पुट कर दी माइनस आयोटा h का डेल, और डेल जो है r क्रॉस डेल, ये माइनस आयोटा h कट बाहर ले लिया. अब डेल की वैल्यू हमारे पास ये मौजूद है, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा h कट इंटू जो r वेक्टर था हमने उसको मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया है. ये आपने पहले पढ़ा होगा दैट r वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड एंड द यूनिट वेक्टर ऑफ इटसेल्फ. सो मल्टीप्लाइड बाय दिस फैक्टर. ये ऐसा क्योंकि इसमें यूनिट वेक्टर्स r, थीटा और फाई भी हैं, तो वो उसके मल्टीप्लिकेशन में उसको आसानी होगी उससे. तो ये डिटेल कैलकुलेशंस हैं थोड़ी सी, but when we will do it we will get this determinant, and from this determinant we can get the value of L. From this value of L, which is the orbital angular momentum, now we can calculate the component of this angular momentum in terms of the spherical coordinates. But before calculating the components of orbital angular momentum, we must know the values of I, J and K in spherical coordinate system. ये MMP में इनकी वैल्यूज ऑलरेडी आपने पढ़ी होंगी. इनफैक्ट FSC की बुक में भी इनकी वैल्यूज गिवन है. तो अब हम उसके जो x कंपोनेंट अगर हमने फाइंड करना है एंगुलर मोमेंटम का, so this will be equal to I dot L, which is, ये हमारे पास कैपिटल की वैल्यू ऑर्बिटल मोमेंटम की और ये I की वैल्यू है. So this, for calculating the x component we will take the dot product of I into L, and then we will multiply for y component. For Ly we will multiply J into L, and for z component we will multiply K into L. So as you can see from these equations, these will again little long mathematics, but I hope you can do it easily. So when you do it you will get these results. This is the x component, this is the y component, and this is the z component. So in next lectures we will only in fact we will mostly use only the z component for the purpose of our calculation and discussion, and later on we will see that the behavior of x and y are quite similar to that of z. So we will, that's why we use z, because it's simple and it will help us in calculation. And moreover, this is L square, which is equal to Lx square plus Ly square plus Lz square. We call this factor as the total orbital angular momentum. हम इसको बहुत ज़्यादा यूज करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में. सो रिमेंबर, Lx, Ly, Lz are the components of the angular momentum, and L square is the total orbital angular momentum. So these were some basic information about the angular momentum in Cartesian coordinate and in spherical coordinates. Thank you very much for your time, and comment below if you have any question, and tell me what's the most important concept that you have learned from this video. Thank you very much.